So, very good evening, friends. Today we'll start with MCQ on chapter 2. So, the first question in this is trading life cycle starts with. Is it visible or should I make it a bit bigger? ठीक है इतना? विजिबल विजिबल है ना? ठीक है. तो थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर दीजिए. अब ठीक है. अब ठीक है ना? हाँ हाँ. तो ट्रेडिंग लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर. बिल्कुल ठीक. ठीक है. ओके. तो प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर इसको हम क्या करें? इसको फिल कर देते हैं. ठीक है. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकिल ऑन स्टॉक एक्सचेंज? क्या सीक्वेंस क्या है? पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है? प्लेसिंग ऑर्डर, ट्रेड कन्वर्जन. सी होना चाहिए. सी. डी. हाँ जी. राजेश जी आपकी बात सही नहीं आ रही. मैं तो गाड़ी में हूँ ना. हाँ कोई बात नहीं. मैं गाड़ी में हूँ ना सर, थोड़ा पता नहीं चल पाता. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है. तो क्या आंसर होगा इसका? सी ही लग रहा है वैसे. सी लग तो रहा है. first of all you place the order, then trade is executed, and then trade confirmation, clearing, and then you receive the payment. So the answer is C. ठीक है. Next देखते हैं settlement cycle. Settlement cycle में क्या? What is the procedure? In NASM it is a T plus Q. Actually it is a T plus 1. Okay. T1. एग्जाम पर्पस के लिए T+2 ऑप्शन सही है, क्योंकि बुक में भी वैसे ही है. They have also referred to T plus 1 also. T plus 1 बोल रहा है. T plus 1 rolling settlement is also being introduced in a phased manner. Oh, is it there? Okay. So they are mentioning T plus 1 also. ऐसा नहीं है. So now you have to take a chance. तो T plus 1 ही मेरे हिसाब से लेना चाहिए हमें. अगर लेटेस्ट वही है तो T plus 1 ही लेना चाहिए. तो which of the following statements is not true? These are the three options. Broker on checking securities and client account will send order for execution. The question is which of the following statement is not true? तो पहला तो ट्रू लग रहा है. ब्रोकर रिसीव्स बाय ऑर्डर थ्रू फोन और इंटरनेट, ये भी ठीक लग रहा है. इन केस ऑफ नॉन मैचिंग ऑफ ऑर्डर एंड ट्रेड कंफर्मेशन, ऑर्डर लाइज इन ऑर्डर बुक इन केस ऑफ लिमिट ऑर्डर. So which of the following statements is not true? Placing of the order. Because you can book an order on phone or through internet banking also. And definitely broker will check the securities in client account. Then he will send the order for execution. In case of a sale order, in case of a buy order, he will check the bank accounts. लिमिट ऑर्डर में तो एग्जीक्यूट होता है ना रेंज में. हाँ. वहां मैचिंग की बात ही नहीं होती. मैचिंग की बात होती है, लेकिन ट्रेड सर इसमें. So C is the option. When the order lies in limit, when the order lies in this order book, on receiving the order, the exchange will send an order confirmation to the broker system, and the order is matched with the suitable counter order. If a counter order is found, the order is executed, and the trade confirmation message is sent to the broker system. If the order is not matched, then it lies in the order book in case of limit order, or it is cancelled in case of immediate or cancel order. तो ये तो सही लग रहा है थर्ड स्टेटमेंट. तो
सी है लग रहा है। मैडम नॉट से पूछ- नॉट ट्रू की बात हो रही है, विच वन इज फॉल्स? हाँ, तो अगर नॉन मैचिंग हो जाएगी तो ऑर्डर बुक में ही पड़ा रहेगा। ये भी ठीक लग रहा है, ये कोई गलत थोड़ी है थर्ड ऑप्शन में। बोलता है क्या बोलता है, इफ द ऑर्डर इज नॉट मैच्ड देन इट लाइज इन द ऑर्डर बुक इन केस ऑफ लिमिट ऑर्डर। तो मैडम से पूछना पड़ेगा, कोई बात नहीं, क्या है मेरे को तो मैचिंग ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डर बुक में पड़ा रहेगा सर टिल द एंड ऑफ द तो ये भी ट्रू है ना, नॉट ट्रू तो नहीं कह सकते ना इसको। यस सर। यस, तो सारे ही ट्रू हैं सर। हाँ, इसको ये एक मैन्युस्क्रिप्ट से देखें एक बार, जो इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट भेजा उस पर टाइपिंग में कुछ गलती कर दिया हो। और जो नॉट ट्रू वो डी तो है ही नहीं इसमें। हाँ नहीं, वो डी की बात नहीं, कहीं हो सकता 3 ही दिए हों ऑप्शन, कई जगह 2 भी दे रखे हैं। यस सर। ऐसा कुछ नहीं, ये देख लेते हैं यहाँ क्या बोलते हैं। इन केस ऑफ नॉन मैचिंग ऑफ ऑर्डर एंड ट्रेड कंफर्मेशन ऑर्डर लाइज इन ऑर्डर बुक इन केस ऑफ लिमिट ऑर्डर। तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, इसको देखेंगे क्या है, पूछ लेंगे मैडम से क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आर कवर्ड इन ऑर्डर मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड इन ऑर्डर तो मैनेजमेंट। फोर्थ का आंसर ए है। ब्रोकर थोड़ी ना चेक करता रहेगा हर सिक्योरिटी को, क्या? वो तो सिस्टम फोर्थ का आंसर ए है। ब्रोकर ऑन चेकिंग सिक्योरिटी इन क्लाइंट अकाउंट विल सेंड। ब्रोकर ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं है, सब सिस्टम जनरेटेड है। तो वो सिस्टम तो हाँ। ब्रोकर ही करता है ना बेसिकली। इसमें देखिए क्या लिखता है, इसमें लिखता है when the broker receives a sell order from a client, the broker's system first checks whether there are sufficient securities in the client's limit account. सर लेकिन ये में ना वो सेल ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, इसमें ऑर्डर की बात है तो इसे बाय भी हो सकता है, तो वहाँ चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, वो तो बाई हो तो भी चेक करेगा, बाई में बैंक अकाउंट चेक करेगा। नहीं सर, यहाँ पे लिखा है कि ब्रोकर ऑन चेकिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो सेल ऑर्डर में ही चेक होगी। ओके, हाँ, तो इस तरह से इसको अगर हम इस तरह से देखें तो ठीक है। शायद वो ये मतलब जो इंटेंशन ये लिखने में कहीं ना कहीं ये रह गया, वरना थोड़ा सा और हाँ, रिफाइन करके लिख तो क्लियर हो जाता है ये। हाँ हाँ हाँ, तो इसका आंसर हम बी ही लेते हैं और इसको जो है ये कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ए वाला जो है कंप्लीट नहीं है, तो ए शुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड इन ऑर्डर मैनेजमेंट? ट्रेडिंग मेंबर, प्राइस नेगोशिएटेड, क्वांटिटी नेगोशिएटेड, एक्शन बाय योरसेल्फ। ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या क्या कवर्ड है? तो इट इज गिवन ऑन पेज 47 एंड इट सेज द ऑर्डर मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ एंटरिंग ऑर्डर्स, order modification, order cancellation, and order matching. And the main components of an order are client identity, price, time, quantity, security, action. ट्रेडिंग मेंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्रेडिंग मेंबर इसके अंदर Trading member, नहीं है। yes. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ट्रेडिंग मेंबर शुड बी द आंसर। ये नहीं करना था इसको, फिल करना ट्रेडिंग मेंबर। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? लिमिट ऑर्डर डज नॉट सेट द एंट्री और ऑब्लिक एग्जिट प्राइस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है? फर्स्ट ट्रू है, ट्रू गलत है। True. है? ट्रू ट्रू। नहीं, नहीं, इट सेट्स द एंट्री एंड इट सेट्स, ये गलत है, गलत है। अच्छा ठीक है। दूसरा, मार्केट ऑर्डर विदाउट प्रोटेक्शन मींस ट्रेड्स आर एक्सिक्यूटेड टिल इट रीचेस ए स्पेसिफाइड लेवल। ये ट्रू है गलत है? Till it reaches a ये भी गलत है, specified ये भी level. गलत ये है। भी गलत है। गलत है, गलत है। In stop order, client enters the prices, trigger price plus limit price. ये ट्रू है, तो ए एंड बी गलत लग रहे हैं। तो स्टॉप ऑर्डर में क्या है? स्टॉप ऑर्डर क्या बोलता है? द टाइप ऑफ ऑर्डर
that allows the trading member to place an order which gets activated only when the market price of the relevant security reaches or crosses a threshold price. Until then, the order does not enter the market. So in stop order, the client enters two prices. One is the trigger price and the other is the limit or market price. तो ये तो सही लग रही है स्टेटमेंट, Yes, sir. Yeah. है ना? तो पहले दोनों गलत है क्या? Yes, sir. तो ए प्लस बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना? ठीक है, ये मैडम के पास भेज देंगे, भाई चेक करो ठीक है करेंगे। मैडम ज्वाइन करेंगे आज? बी वाला ट्रू है। हाँ तो ए और बी दोनों ट्रू है ना? ए और बी दोनों ट्रू है ना? ये भी तो ट्रू था, ये ट्रू था कि नहीं था? लिमिट ऑर्डर डज नॉट सेट द एंट्री और ऑब्लिक एग्जिट It set the entry exit price. नेक्स्ट देखते हैं। When the stop loss gets triggered, these are the options. When first traded price, ये stop loss होता क्या है? C, when last trader prices in secondary market reaches trigger price. C. C. ये आएगा सी। ये stop loss के बारे में बुक्स में दिया हुआ है कहीं? Yes, stop loss is given on page number 48. In such a scenario, a trader can give a stop loss sell order with trigger price of 96 and limit price of 95. So when the stock price starts moving downwards, as soon as it hits the price of 96, the sell order of 95 will automatically get triggered. Any further downward movement in price will not affect the trader as he has already limited his loss in the position. So when last traded price in secondary market reaches the target price. तो यही आंसर होगा इसका सी। सी। नेक्स्ट है, which of the following statement is not true in case of immediate cancel order? So immediate or cancel order, this is given on page number 49, and it says an immediate or cancel order allows a trading member to buy or sell a security as soon as the order is released into the market, failing which the order will be removed from the market. Partial match is possible for the order and the unmatched portion of the order is cancelled immediately. So which is not true? So second statement is true, partial match is possible. And member to buy or sell securities as soon as an order is released. This is also true. So second and third statements are true. A member can buy or sell securities in the same day. This is actually true in case of intraday. Yeah, no? So I think A is not true. Haan ji, Chako ji? A is true. Member can buy or sell securities in the same day, that is intraday. That is a true statement. It is, but it is saying of immediate or cancel order, no? Okay. In that sense, yeah. In that scenario, it is not. Because second and third are true. Partial match is possible. Yes. And member can buy or sell securities as soon as order is released. That is also true. Yeah. So in this situation, A is wrong answer, I think. A is not true. Ninth का क्या? Order confirmation is given by? This is given point number 2.1.4 and says once the order is entered and confirmed by the client dealer at his trading terminal, the order is routed to the exchange for its execution. The exchange system allows a unique order number for all orders received in the system. This is given as order confirmation along with the timestamp to the broker system. So order confirmation is given by
डी आएगा। C. Exchange Yeah. allowed say unit. सी आएगा, एक्सचेंज अलाउंस, एक्सचेंज करता है ना, एक्सचेंज ठीक अलॉट है। करता है यूनिट नंबर, है ना, तो सी विल बी द आंसर। व्हाट इज द बेस्ट सेल प्राइस? The order matching in an exchange is done based on the price time priority. The best price orders are matched first. If more than one order arrives at the same price, they are arranged in ascending time order. Best buy price is the highest buy price amongst all orders, and similarly, best sell price is the lowest price of all sell orders. So, what is the best sell price? So the The best lowest sell price of all sell order, B. Lowest sell price of all sell orders. So B is the option. And active orders are Which are not matched. all orders come as active orders into the order book. If they get a match, they will be executed immediately. Else they will be entered into the order book according to price and time as passive orders. So active orders are orders which are entered in the order book. So all orders come as active orders into the order book. If they get a match, they will be executed immediately, else they will be entered into the order book according to price and time as passive order. So B should be the answer. अच्छा ऑप्शन क्या बोल रहा है ये भी देख लो. Here it is A plus B. Why A plus B is not there? Because orders once they are executed, so they are termed as passive orders. वो तो सेटलमेंट हो जाएगा ना उसका, तो वो तो मैच हो जाएगा. Active means it is matched and then entered in the book. Actually, once they match, now their character changes. Oh yeah. Only B only B then. That is not in the option. If they get matched, they will be executed immediately. That is So in this case, what will be the option? या तो A plus B plus C करें, सारा भी हो सकता है. All the three can also be there. Because it says all orders come as active orders into the order book. If they get a match, they will be executed immediately. Else they will be entered into the order book according to price and time as passive orders. So it means एक्टिव तो B आएगा ना, है तो वो होंगे जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं. वो तो पैसिव हो गए ना. नहीं, जो एक्टिव नहीं हुए हैं तो कैसे, मतलब जो एग्जीक्यूट नहीं हुए तो वो तो एक्टिव है. डिजायर्ड प्राइस आने पर वो एक्टिव मतलब मैच हो जाएंगे ना. अगर एक्सिक्यूट नहीं हुए तो दे विल बी टर्म्ड एज पैसिव ऑर्डर्स, फिर पैसिव हो जाते हैं. वो तो फिर कैंसिल हो जाएंगे ना एट द एंड ऑफ द डे. नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ एक्टिव की बात है ना. एंड तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें? कुछ ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को तो इसमें. नहीं, actually 3 stages are there: active or executed and then passive. And we have to define what is active. Active, executed, and then passive. That's what it is mentioned in the text. if you go to page number 50, it says all orders come as active orders. So when the order comes, it is an active order. Okay. But If they get a match, they will be executed immediately. Else they will be entered into the order book according to price and time as passive orders. passive. So it means if an order is not executed, it is a passive order. It becomes a passive order. So order can be active at the time of entering or
up to the time of execution only. So this is what it means basically. Okay, then B is the answer. मैडम आ गई, गुलाटी मैडम आ गई, नहीं आई? कोई बात नहीं, हाँ उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है शायद इसलिए। कोई बात नहीं, वी कैन कीप इट एट पेंडिंग, वी कैन कीप इट एज पेंडिंग। इसमें ना कुछ कंफ्यूजन है? एबीसी कर दो इसको फिर तो। हाँ हाँ, फिर तो तीनों एबीसी ही कर कर दो। हाँ ये कर सकते हैं हम, एबीसी इसको कर सकते हैं, ए बी और सी। नहीं खैर सी भी नहीं हो सकता ना, जो एक्सिक्यूट हो गए वो तो वे पैसिव बन गए ना। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो क्लियरिंग फंक्शन ऑफ ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज, अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे आ जाइए। The clearing function of clearing corporation is, this is given in 2.2.1. The clearing function of the clearing corporation is designed to work out what trading members brokers are due to deliver and what trading members brokers are due to receive on the settlement date. ठीक है, क्या लेना क्या देना, ये काम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। तो क्लियरिंग फंक्शन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज, in the clearing corporation, this is done by a process called multilateral trading. This process is performed by the clearing agency. The clearing agency guarantees that all contracts which are traded will be honored. So multilateral netting is also the function. First is the function. Second, this clearing agency also guarantees that all contracts which are traded will be honored. And then they have devised mechanism to handle the correct. difficult All of them. situations also. Clearing Yeah. corporations have also devised mechanism to handle various exceptional situations like security shortages, bad delivery, company objections, auction, settlement. So all of the above should be answered. Next, when are clearing obligations discharged? On acceptance, it should be on acceptance, on execution, on settlement, recording in trade, oblique, order, register. Clearing obligations, Chakoji, where are they given? No, I'm searching. I cannot find it. I think on settlement, but that much. So page 52, 2.2.6, second paragraph, second last line. Ensuring the settlement, responsible for ensuring the settlement. नहीं ये कुछ और पूछ रहा है सर जी। ये हमारा क्लियरिंग ऑब्लिगेशन कब डिस्चार्ज हो जाएगा? एक्सेप्टेंस पर होगा, एक्सीक्यूशन पर होगा, सेटलमेंट पर होगा, कब होगा? या फिर रिकॉर्डिंग इन ट्रेड ऑब्लिक ऑर्डर रजिस्टर। तो सबसे पहले तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट clearing corporation receives the details of the trades and prices from the exchange. Settlement obligations are computed using predefined methodology specified for the segment.
क्लियरिंग ऑब्लिगेशंस कब डिस्चार्ज हो जाएंगे? सेटलमेंट पर ही होना चाहिए। Clearing corporation ensures that members meet their fund security obligations. It acts as a legal counterparty. Clearing corporation, being counterparty, is responsible for ensuring the settlement, thus managing risk and guaranteeing settlement to both the parties. Sir, in page 50, there is a line, page 50, 50. Page 50, okay. Where? The clearing is the process of determination of obligations after which the obligations are discharged by settlement. Yes, right. So they are discharged on settlement, है ना? ठीक है, right. Next is on arriving at settlement days, intervening holidays are excluded. Intervening holidays, Saturday, Sunday are excluded. T+2 settlement happens in 3 days. Gulati ji has entered. So I think second should be the answer. Intervening holidays, Saturday, Sunday are excluded. Hai na? They have given it somewhere. Page 51 first paragraph. Yes, 51, right. All intervening. So holidays, hence a bank- settlement cycle is the period within which the settlement is made. For arriving at the settlement day, all intervening holidays, bank holidays, exchange clearing corporation holidays, Saturdays and Sundays are excluded. तो ये वो मेरे वाले क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की पिक्चर चल रही है ये। अच्छा, मैंने तो भी ज्वाइन किया। हाँ वही तो। आपके क्वेश्चन को ना टाइप करवा दिया लड़के से, मैं कहा हाँ, इसको टाइप कर दो। वही और- मैं हैरानी हो रही थी कि लग तो मेरे रहे हैं पर ये टाइप कैसे हैं? बच्चे तो आपके ये वो नहाए धोए से लग रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल सही। मेरे बच्चे तो गंदे बंदे थे, ये साफ सुथरे कैसे लग रहे हैं, क्या चक्कर हो गए? उत्तर आंसर मेरे पास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो अभी तो कैन वी आर एट 15th क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन में डाउट है, विल आस्क यू। अब 15th क्वेश्चन पर हम लोग। तो क्लियरिंग बैंक्स आर इंटरमीडिएरी बिटवीन member plus clearing corporation, member plus stock exchange, buyer plus seller, member plus depository. Regarding intermediaries, this is given in 2.2.2. Clearing banks act as an important intermediary between a clearing member and the clearing corporation. Every clearing member needs to maintain an account with any of the empaneled clearing banks and the designated clearing bank branches. So clearing banks, they are an intermediary between a clearing member and the clearing corporation. So first should be the answer. हाँ जी यही है। है ना? अच्छा, सेटलमेंट इन कैश मार्केट। सो सेटलमेंट इन कैश मार्केट क्या होगा? D. क्या बताया? In the case of cash market, this happens on T+2 and or T+1 day. हाँ तो डी आंसर है। हाँ D. Who are the custodians? So regarding custodians, it is given in 2.2.3 and it says custodians are institutional intermediaries who are authorized to hold funds and securities on behalf of large institutional investors such as banks, insurance companies, mutual funds, and foreign portfolio investors. They settle the secondary market trades for institutional investors. So who are custodians? डी। Yes. So they are institutional intermediaries who hold funds on behalf of banks, insurance, mutual funds, etc. And foreign portfolio investors. ये भी हो जाएगा। So D should be the answer.
Next question. Settlement obligation does not use predefined methodology, pre-estimated, predetermined, market driven. These are the options. These are the answers. Settlement obligation does not use clearing corporation receives the details of trades and prices from the exchange. Settlement obligations are computed using predefined methodology specified for the segment oblique product. सर ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, मार्केट ड्रिवन नहीं है, ये वाला फोर्थ में बी सी एंड डी, ये फोर्थ ऑप्शन में। ओके, अच्छा अच्छा, ये फोर्थ ऑप्शन में क्या है? बी सी एंड डी। ओके, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो Answer बताइए। is only A, right? क्या होता है? Predefined method. प्रीडिफाइंड मेथोडोलॉजी। So answer should be A. 4 does not include. फोर्थ तीनों है, प्री डिफाइंड, प्री डिटरमिन्ड, मार्केट ड्रिवन तीनों है। It does not use. प्री डिफाइंड नहीं है, हाँ, प्रीडिफाइंड यूज करता। हाँ प्री बिल्कुल डिफाइंड यूज करता है तो डज हाँ, नॉट है, आंसर हाँ। होगा फोर्थ। बिल्कुल बिल्कुल, बी सी एंड डी, राइट। In case of failure by a broker oblique clearing member to fulfill their obligation, will the settlement take place? Settlement होगा या नहीं होगा? सेटलमेंट होगा नोवेशन टेक्निक से। Clearing property से। हम्म। Yes, settlement में होगा। हाँ, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आ जाएगा ना बीच में। हाँ, वो तो थर्ड पार्टी है ही ना बीच में। हम्म। Which statement is false? Broker should have prudent system of risk management. Broker should protect from client default. Broker should make margin when client default. Broker to bear loss in case of default by client. Which statement is false? ये भी देखना है। Fourth will be the answer. हाँ, डी Broker will आंसर। not be on loss. It will be the clearing corporation who has to bear the risk. हाँ जी मैडम। ये मैं देख रही हूँ क्योंकि टाइपिंग वेरी वो हुई है, वो आगे पीछे। एक मिनट, इसका आंसर उसी ऑर्डर में टाइप किया जिस ऑर्डर में दिए थे आपने। नहीं, उसमें नहीं है टाइप ना। अच्छा, एक मिनट देखने तो कौन सा वाला है ये। हाँ, इसके अंदर तो वैसे बता देती हूँ, इसका आंसर जो है डी है। डी फॉर दिल्ली। हाँ जी, फॉल्स है ना, बाकी तो सब है ही है। फॉल्स है। हाँ, खुराना जी सही बता रहे थे। नेम द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हाँ, इनमें से कौन सी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है? हाँ, B. डी बिल्कुल सही। नहीं, B है सभी। मेट्रोपॉलिटन Yes. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हाँ, मेट्रो क्लियरिंग। बाकी मैंने देखो वो क्लियरिंग लिखा है, वो मतलब वो मैंने क्लीनिंग लिखा था सर, आपने क्लियरिंग कर दिया। ओ अच्छा, वो अच्छा, वो लड़के ने मुझसे पूछा था कि समझ में नहीं आ रहा। मैं मैंने This is the interesting. ये तो है ही है ना, अच्छा। आईसीसीएलपी है, तीनों हो गए ना, इसके हिसाब से तो बी सी डी तीनों ही ठीक हो गए। समझ गए। Yeah, हाँ this जी, is the बोलो। interesting हाँ part जी। in making the questions. This ठीक is है, the interesting part. हाँ, तो मैंने लिखा था क्लीनिंग, तो अच्छा, आंसर था क्लियरिंग बी। लिखना। ओहो। आंसर हो गया बी सी डी तीनों ही है ना। अरे लड़के ने मुझसे पूछा कि सर कुछ ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या वर्ड है? मैं कहा यार क्लियरिंग है ये। हाँ, क्लीनिंग नहीं, क्लीनिंग है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा था मैंने ये। अच्छा, तो ये भी क्लीनिंग है। अच्छा, और हाँ जी, पहला हाँ जी, वाला? हाँ जी। पहले वाला तो बाकी ठीक है, ये- नेशनल स्टॉक। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे होता ही नहीं है, तो आंसर है। डी हो गया ना। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन। ओके, अच्छा, ठीक। मेट्रोपॉलिटन कर दिया इसमें भी, इसको मेट्रोपॉलिटन कर दें। हाँ, मेट्रो, हाँ, पॉलिटन, ठीक है।
POLI, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या? मेट्रोपॉलिटन है, TIAN। TIAN, हाँ TAN होगा ना ये? TAN होगा ना? हाँ TAN, ठीक है, अब metropolitan, हाँ। ठीक है, ठीक है, हो गया। अच्छा, which statement about auction of securities is false? इन तीनों में से which statement about auction of securities is false? Auction कब होती है? When there is excess, abundance in delivering by selling broker. Shares bought under auction are delivered to buying broker. Auction take place when selling broker fails to deliver the shares. C आएगा। बट फॉल्स फॉल्स बोल रहा है वो बोल फॉल्स रहा है है, फॉल्स कौन सी? ट्रू नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स। हाँ तो सी अच्छा। वाला तो ट्रू है हाँ, ना? तो B भी ऑक्शन ट्रू है। B भी ट्रू है और फॉल्स है A। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऑक्शन ठीक। ऑक्शन इज सॉर्टेड व्हेन देयर इज एक्सेस ऑब्लिक अबंडेंस। एक्सेस होगी तब थोड़ी होगी, तो शॉर्टेज होगी हाँ, तब होगी। ऑप्शन होती है जब शॉर्टेज हाँ, होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, इन द केस ऑफ shortage in delivery by a seller broker who fulfills the obligation towards buying oblique trading member. In case of shortage in delivery by a seller broker who fulfills the obligation towards buying trading member. सेलर ब्रोकर करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करेगी, स्टॉक एक्सचेंज करेगा, बाइंग ब्रोकर करेगा। ब्रोकर होना चाहिए। ब्रोकर सेलर ब्रोकर। ना, ना, रॉन्ग। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करेगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, बी। Process of novation addresses. Sir, one doubt, if clearing corporation is bearing all the liabilities, then who will make a that they only loser always. How they can? They are an intermediary only, but they will take action against the person. No, they will take action against the, because basically the trader will recover. The trader will recover from the investor basically. No. Oh, okay. पेज 52 है, देख लेना इसका। हाँ जी, novation. Process of novation addresses. So it says in a multilateral netting scenario, when a default occurs, it is difficult to unwind the trade to find the original counterparty who will have to bear the loss. The process of novation addresses this risk, and because by way of novation, clearing of corporation enters in every transaction of sell and buy. So the process of novation addresses naturally आपने बता default दिया in आंसर। default in multilateral. So the answer is B. Risk containment measures include, then these are the answers. Risk containment measures include capital adequacy requirement of member, online monitoring of members' position, settlement of trade, protection from default of client. सेकंड था ऑनलाइन मेंबर पोजीशन मॉनिटरिंग, उधर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ मेंबर पोजीशन कर दिया है। एनीवे, एक ही बात है ना, वो तो एक ही बात है, ये तो ठीक ही है। सेटलमेंट ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। So risk containment measures include पेज नंबर 53 में है। 53. Auction of securities. An auction is resorted to when there are shortages. This mechanism is utilized by the clearing corporation to fulfill its obligation towards the buying trading member. So thus, when the selling broker fails to deliver the shares, the clearing corporation through the stock exchange system conducts an open market purchase by an open auction, and the shares bought through the auction are delivered to the buying broker and adequate penalties are levied. So basically, इसका आंसर ऑप्शन सी है सर, ए एंड बी। towards the एडिक्वेसी एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग दोनों होता है। okay. So what is the answer? C. ये सी, हाँ, Third option, A plus B.
कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, नॉन लाइन मॉनिटरिंग। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु एंश्योर्स दैट द फंड्स आर अवेलेबल विद क्लियरिंग बैंक फॉर मेकिंग पेमेंट। तो इट इज इन केस ऑफ बाय ऑर्डर, तो इन केस ऑफ बाय ऑर्डर, तो मेकिंग पे आउट है सर। अच्छा, विद क्लियरिंग बैंक फॉर मेकिंग पे आउट, अच्छा क्लियरिंग के टाइम पे, ठीक है। तो क्लियरिंग बैंक के पास होगा, ये कौन देखेगा? क्लियरिंग मेंबर, पेज 52। क्योंकि पहले जो है क्लियरिंग बैंक ही देखता है कि पहले दोनों में बाय आउट करना है कि उसके पास सिक्योरिटीज एडिक्वेट है कि नहीं है, और अगर सेल करना हो तो पैसा है कि नहीं है। तो ये क्लियरिंग जो है मेंबर देखता है कि क्लियरिंग बैंक के पास ये सब कुछ है कि नहीं है। तो चाहे वो पे आउट है चाहे सिक्योरिटी बाइंग है, दोनों के लिए क्लियरिंग मेंबर है। तो क्लियरिंग मेंबर विल एंश्योर हाँ जी सर। दैट फंड्स आर अवेलेबल। हाँ जी सर, पेज 52। A trade has taken place on Thursday, its payout will be on, हाँ ये भाई अगर T+1 मानोगे या T+2 मानोगे वो बात है, अगर T+1 मानेंगे तो कहाँ होगा? बताइए, यही तो क्वेश्चन है। T+1 में तो फ्राइडे हो जाएगा, और T+2 में मंडे हो जाएगा। मंडे हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल 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 हम्म। सही। नॉर्मली T+2 ही होता है, तो आंसर मंडे होगा। ओके, चलो मंडे मान लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैन ऑर्डर्स बी मॉडिफाइड टिल दे आर नॉट फुल्ली एक्सिक्यूटेड? Yes. ये तो हो ही सकते हैं। यस यस Yes, यस। that happens. Until matching happens. Which statement is correct? In limit order, trader sets entry oblique exit price, and in stop order, members can place order when threshold price is achieved. In stop order, member can place order at initial level and then cancel. इनिशियल, हाँ क्या लिखा है? At initial level, and ये क्या देखो, देख लेना थोड़ा। and then cancel it, cancel। हाँ, ये इसको ठीक कर देता हूँ, cancel it, okay. हाँ, While while in in limit order, member member can cancel when stock hit the threshold limit। member कौन सी करेक्ट है? can cancel when stock hit the threshold limit. So which of these is correct? फर्स्ट वन। यस बिल्कुल ठीक है, 29 का ए ही आंसर। So in limit order, trader sets the entry oblique exit price, and in stop order, member can place order when threshold price is achieved. 30, client identity, time, quantity are components of contract note, order, security note, trade contract. नो। ये तो अभी पढ़ा भी था हमने, थोड़ी देर पहले ही देखा था। क्या चीज सर? 30 का आंसर, क्लाइंट आइडेंटिटी, टाइम, क्वांटिटी आदि कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर के हैं भाई ये। हाँ, ऑर्डर के पेज नंबर 47, अभी पढ़ा भी तो था, अभी तो पढ़ा था हाँ, हमने, ऑर्डर इसके अंदर मैनेजमेंट में। और भी आता है, ऑक्शन आता है, बाय आता है, बड़े सारे कंपोनेंट है, मैंने तो सिर्फ 2-3 ही उठाया है। ऑर्डर में Order. After settlement, right? ठीक है जी। अच्छा, देयर वाज सम कंफ्यूजन मैडम, एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, वो देख लेते हैं। बताइए सर। एक ही क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन आया, या तो वो टाइपिंग में गलत हुआ या क्या हुआ, ये वाला, एक्टिव ऑर्डर्स आर, 1 मिनट सर देखने दीजिए मुझे। ऑर्डर विच आर
mature, orders which are entered in the order book, orders which are executed. पहले तो ये देख लीजिए टाइप ठीक किया है कि नहीं किया। एक सेकंड देखने तो, orders which are matched, orders which are entered in the order book, orders which are executed. हाँ ठीक किया है सर, ऑप्शन एक्टिव ऑर्डर। तो एक्टिव ऑर्डर के इसका आंसर जो है सर ऑप्शन नंबर सेकंड है, 11 का सेकंड ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप ये पेज नंबर मैंने लिखा नहीं हुआ, ये देखेंगे तो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर विच आर मैच्ड भी है, एंड ऑर्डर विच आर एंटर्ड इन विच, एंड ऑर्डर विच आर एग्जीक्यूटेड। तो दोनों ऑर्डर्स है विच आर मैच्ड। क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो अगर एक्टिव ऑर्डर क्या होता है कि जब ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो ऑर्डर मैच करेगा वो, और मैच करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसी को ठीक है। एक्टिव बोलते हैं। तो वो ठीक है। मैच्ड एंड एग्जीक्यूटेड दोनों ये जो है, तो ए एंड सी वाला ऑप्शन वो है सेकंड ऑप्शन। लेकिन हाँ, ऐसा लेकिन- बोलता है, लेकिन ऐसा है ना मैडम, वो क्या बोलता है, तो ए एंड बी होना चाहिए। ए एंड बी नहीं है ना, एग्जीक्यूटेड है। अब एक्टिव एग्जीक्यूट ऑर्डर, किया मतलब एक्टिव नहीं है, एक्टिव कैसे होगा फिर? अरे तो एक्टिव आप ये, अब मेरे पास वो किताब नहीं है, नहीं तो मैं आपको बोलेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी उस पे व्हाट्सएप पे। नहीं बुक तो मेरे पास है, बुक से मैं पढ़ लेता हूँ। ऑल ऑर्डर, मैंने व्हाट्सएप किया है सर, देखना एक बार। अच्छा यही वाला या आपके क्वेश्चंस? वो जो है एक्टिव पैसिव ऑर्डर का गूगल से निकाल के किया, देखना इसका आंसर नहीं, मिलता है क्या? NISM की किताब में ही देखिए ना, उसी से निकाला है, उसी में ही है। नहीं वो उसी से रिलेटेड है, कोई ऐसी बात। एक मिनट या मैं खोलती हूँ। हाँ, ये आपका आया है कि an order is called active when it is running either for the duration of the trading day or for the duration of the trading day plus extended trading hours, तो ये active माना जाएगा। तो orders lying unmatched in the system are passive orders, and orders that come in to match the existing orders are called active orders. Orders are always matched at the passive order price. This ensures that the earlier orders get priority over the orders that come in later. सर एक्टिव ऑर्डर है तभी तो वो एग्जीक्यूट में जाएगा T+2 सेटलमेंट में। अभी तो बोला है मैंने, एक्टिव ऑर्डर क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन में जाएगा और जो उसमें होगा वही तो होगा। एक्टिव ऑर्डर आर व्हिच आर एग्जीक्यूटेड एंड अंडर द एंड सेटलमेंट विच आर साइकिल। एग्जीक्यूटेड एंड, हाँ बिल्कुल, तभी आंसर जो है इसका ऑप्शन है ए एंड सी दोनों। लेकिन आप ये देखो फर्स्ट लाइन देखो मैडम, पेज 50 का क्या बोलता है, ऑल ऑर्डर्स कम एज एक्टिव ऑर्डर्स इनटू द ऑर्डर बुक। तो इसका मतलब तो जो ऑर्डर एंट्री बुक में होते हैं वो भी एक्टिव ऑर्डर होते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये उठ रहा है, हमारा पॉइंट ये है कि पॉइंट ये बी भी ठीक लग रहा है हमारे को। क्वेश्चन ये, सर एक मिनट, मैं एक मिनट निकाल रही हूँ सर, मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं हाँ प्लीज आप आराम से मैंने देख लीजिए। किताब खोल ली है। हाँ पेज नंबर 50। पेज नंबर 50, अच्छा हाँ सेकंड चैप्टर में फिफ्थ क्यों खोल लिया मैंने। फर्स्ट लाइन देखिए आप, फर्स्ट गलती से मैं लास्ट सेंटेंस पढ़ लो, लास्ट सेंटेंस, else they will be entered into the order book, order book में एंटर हो जाएगा according to price and time as passive orders। तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि सेकंड भी ठीक है, ए और थ्री तो चलो ठीक मान ही ले हम, लेकिन बी भी ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा था और कुछ नहीं। बी तो ठीक ही है, बी भी ठीक है, ए भी ठीक है सर। एक मिनट, अब मैं गलती से फिफ्थ पे चली गई थी, अब मैं खोल रही हूँ, आ गया। नहीं सर, राइटर लगा हुआ है, स्टार्टिंग ऐसे कर रहा है, ऑल ऑर्डर्स कम बैक ऐसे एक्टिव ऑर्डर इनटू द ऑर्डर बुक। ठीक है, ऑर्डर बुक में सारे ऑर्डर एज एक्टिव ऑर्डर हो गए। इफ दे गेट मैच्ड दे विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, मैच होने पर एग्जीक्यूट हो गए। एल्स जब मैच नहीं हुए दे विल बी एंटर्ड इन द ऑर्डर बुक, ऑर्डर बुक में एंटर अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड टाइम एज पैसिव ऑर्डर। तो वो पैसिव ऑर्डर कहलाएंगे जो मैच नहीं हुए और ऑर्डर बुक में एंटर हो गए। हाँ यही तो देखा था मैंने, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा है सर, या तो ऐसा है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी में। या तो ऐसे कर दें कि ऑर्डर्स विच आर एंटर्ड इनटू द ऑर्डर बुक एंड आर नॉट मैच्ड, ऐसा कुछ लिख दें। नहीं Second सर, में। इसमें देखिए
आप लाइन पढ़िए जो order, ये 47 के ऊपर है. ऑन रिसीविंग द ऑर्डर एक्सचेंज विल सेंड एन ऑर्डर कंफर्मेशन टू द ब्रोकर सिस्टम. एन ऑर्डर इज मैच्ड विद द सुटेबल काउंटर ऑर्डर. इफ द काउंटर ऑर्डर इज फाउंड, द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड एंड द नहीं। ट्रेड कंफर्मेशन इज सेंट. ऐसा है ना, यही आप यही तो पेज active नंबर एक मिनट, पेज नंबर 50 की फर्स्ट लाइन पढ़िए, टॉप अच्छा, टॉप मैं में सबसे ऊपर. मैंने 47 का बता दिया, मैं पेज नंबर 50 पे भी आती हूँ. हाँ, ऑर्डर रूटिंग. ऑर्डर्स आप प्लेस की बात कर रहे हो आप? नहीं, पहले ऑल ऑर्डर्स कम एज एक्टिव ऑर्डर्स इनटू द ऑर्डर बुक. कौन से पैराग्राफ में है ये? पेज नंबर सबसे 50 में. पेज नंबर 50 पे सबसे ऊपर की लाइन है. हाँ, all orders come as active orders into the order book. If they get matched, they will be executed नहीं, अब यहीं immediately. पे रुक जाओ, पहली लाइन पे रुक जाओ. आप पहली लाइन के साथ में बी ऑप्शन देखो आप. हाँ सर, वो हाँ मैंने लिखा एंटर्ड है. वर्ड नहीं आ रहा ना, एंटर्ड वर्ड तो लास्ट में आ रहा है. एंटर्ड इनटू द एल्स हाँ. दे एंटर्ड. सर इसका मतलब वही है जो 47 में लिखा है. वो ये कह रहा है all orders they will be active orders into they will be entered into the order book. If they get a match they will be executed. यानी कि हाँ. अगर वो मैच करेगा एग्जीक्यूट होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो वो पैसिव में जाएगा. तो यानी कि ये जो मैंने एंट्री करी है वो सब्सिक्वेंट इवेंट है, यही 47 में बोलता है. तो एक्टिव ऑर्डर वो होगा जो मैच हुआ और एग्जीक्यूट हुआ. जो ऑर्डर मैच हुआ और एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो पैसिव में जाएगा. हाँ, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे कर दें. ऑर्डर्स विच आर एंटर्ड इन द ऑर्डर बुक बट आर नॉट मैच्ड, पर ये वाला या फिर अनमैच कर दें. इसी आगे हम कर दें सर अनमैच. ये क्वेश्चन में इसमें थोड़ा का दिमाग इसको लगेगा. नहीं, इसको अगर हम अनमैच्ड कर दें, अनमैच्ड ऑर्डर्स विच आर एंटर्ड इन द ऑर्डर बुक, दे आर नहीं नॉट. सर, नहीं हाँ. सर, ये क्वेश्चन ठीक है. ऑर्डर्स विच आर मैच्ड, मैचिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन होगा तब एक्टिव है. मैचिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन नहीं होता तब वो पैसिव है. यही 50 बोल रहा है, यही 47 पेज बोल रहा है. बहुत क्लियर है सर. आगे Okay. आपको जैसे ठीक लगता चलो है ठीक है. देख- नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो A+C कर दें. ठीक है, ओके. हाँ मैडम जी ये 47 पेज नंबर में कौन सी लाइन? अरे मैंने बंद कर दी, रुको खोलती हूँ. अभी तो 47 पढ़ा था मैंने. काम मैंने है. क्लाइंट प्लेसेस अ सेल ऑर्डर विद द ब्रोकर, यहाँ पर आ रहा है ये. हाँ ये रहा ना ऑन ये ऑर्डर मैचिंग का. When on receiving the order, the exchange will send the order confirmation to the broker. An order is matched with the suitable counter order. If the counter order is found, the order is executed and the trade confirmation is this. If it is not matched, it lies in the order book. वही वाली बात होगी ना कि वही वाली बात है जो 50 में बोल रहा है कि ऑर्डर अगर मैच होगा एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो ऑर्डर बुक में पड़ा रहेगा. वही वो 50 में बोल रहा है. तो आंसर ये क्वेश्चन में आंसर A एंड C ऑप्शन है इसका. ठीक है. तो मैडम हमने क्या किया है, जो ये चैप्टर 5 के क्वेश्चंस थे ना, इसी के नीचे ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन डाल दिए. अब इसी एक्सेल शीट को हम चलाते रहेंगे. जो और क्वेश्चंस आएंगे, जैसे चैप्टर 1 पर आने हैं, कुछ क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर 2 पर, चैप्टर 3 4 पर आने हैं, वो भी इसी के सर, नीचे. और बाद में इनको ना रीशफल कर देंगे. बाद में हाँ, इनको सर, मिक्स कर देंगे सारे को. हाँ जी. कुछ और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो नहीं थी? और बस यही थी सर. ना ना ना, और तो कोई क्वेरी नहीं. सर अभी तो क्वेश्चन वही- ठीक थे. नहीं, क्वेश्चन बहुत ठीक है. बहुत बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए आपने. थैंक यू सर. और 30 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया हो गया. तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इससे ना, ये बात है. हाँ मेरा ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते बनाया मेरी. हाँ बिल्कुल, इससे क्या होता है, अपना भी तो रिवीजन हो जाता है ना. अब हम दोबारा उस पर चले, अपने एक्सरसाइज पर. NISM वाला कुछ देख लेते हैं. अभी थोड़ा टाइम है तो देख लेते हैं. अभी हम चैप्टर 5 पर चल रहे थे, सोशल ऑडिट एंड सोशल ऑडिटर. बल्कि इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा. तो थोड़ा टाइम रिवाइज भी होता रहेगा, पता रहेगा भाई हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा. हम लोग ये पेज 98 पर थे मेरे हिसाब से. यहाँ पर थे हम लोग. एक मिनट, ये स्टॉप शेयर करके शेयर स्क्रीन 98 अब नजर आ रही होगी स्क्रीन में.
तो हमने क्या किया, 5.7 तक मेरे हिसाब से हमने कर लिया था, अब हमें 5.8 पर चलना है। सोशल ऑडिट प्रोसेस। So a typical social audit process is from collecting information to reaching audit conclusion is as follows. सबसे पहले तो we have to collect and verify the information. Audit पे भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले we collect the information and verify during the audit information relevant to the audit objectives, scope and criteria, including information related to interfaces between functions, activities and processes should be collected by means of appropriate sampling and should be verified as far as practicable. Then audit evidence. The evidence can be formulated in the form of documentary. This consists of varieties of documents gathered, verified, checked at the time of auditing. It may include various types of reports, notes, etc. Then oral. So documentary evidence could be documentary, it could be oral also. So this type of evidence includes oral discussions, interactions with various stakeholders of an institution being audited. The auditors must note the inconsistencies, if any. Then physical. So physical evidence is where the audit inspects the asset and counts them whenever required. So it might ask that, okay, physical stock taking is which type of evidence? So they may ask questions like this also. They may not ask direct questions. So stock taking is which type of evidence? So stock taking is physical evidence. So physical evidence is where the auditor inspects the asset and counts them whenever required. This evidence is collected wherever possible based on the nature of the audit. Acha, if you are doing audit of HR department, then what type of audit you will conduct out of these? So ये जो physical evidence audit inspects the asset. Asset may be intangible asset also. हाँ, तो in case of intangible asset, he will verify the वो जो उसके पास ownership rights होंगे, agreements होगा, वहां से verify कर लेगा, उसमें क्या है? HR के लिए तो एनालिटिकल होगा सर, Document also. एनालिटिकल। और डॉक्यूमेंटेशन देख लेगा, HR की फाइल्स देख ले वो। हाँ, HR तो में तो एनालिटिकल फाइल्स होंगी। नहीं, सबसे पहला चला गया ना डॉक्यूमेंटेशन चला गया ना उसमें, इससे ऊपर वाले में। हाँ, इससे पहले वाला जो पढ़ा डॉक्यूमेंट्री में देख लेगा, डॉक्यूमेंट्री। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री कह देगा भाई स्टाफ की सारी फाइल्स ले आओ। एनालिटिकल में क्या है? द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज मेड टू डिराइव द रिक्वायर्ड डेटा और नो द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड. The conclusions here are based on comparisons, calculations, and the relationships between the various pieces of information derived by the auditor. So, analytical is when you derive the required data or know the correctness of information required. So, you may make analytical comparison across various divisions, across various industries, and you can make comparison with the past performance also. So, this is use of analytical procedure. Because if you are watching the profit and loss count, then you might like to compare the GP ratio, NP ratio with past year. So this is an analytical procedure. So the conclusions here are based on comparisons, calculations, and the relationships between the various pieces of information derived by the auditor. Information and documents required by social auditor. The auditor must have access to all documentary evidence collected by the organization relevant to the project activity. Access to primary sources of data on which the social impact report is based on crucial evidence. So what could be the primary sources of data? What could be the primary sources of data in case of social audit? So primary sources could be sample, surveys, interaction, maybe survey, questionnaires with the questionnaire. stakeholders. So these all are primary sources of data which contain direct interaction on which the social impact report is based on crucial evidence. Thus, the auditor must have access to secondary data. This is readily available through a repository of information available with the organization. The records that are maintained by the organization as a part of their routine project activity are examples of secondary data. So data available in the public domain is also secondary data. If need be, social auditors can obtain data from any public authority under RTA. So what are the examples of secondary data? Secondary data is something which is derived out of primary data. Suppose you
did a questionnaire, you sent to some people, they asked the primary stakeholders certain questions, and based on that questionnaire, you prepared a report. So that report is a secondary data. That questionnaire is a primary data. The auditor should demand access to relevant secondary data, which is material to the project to be audited. Some examples of secondary data are out of school children in a slum zone, amount and value of loans given to women in a microfinance program. So this is secondary data. Third is monthly, quarterly, and 6 monthly reports maintained by the organization. Case study reports, intake sheets of beneficiaries should be produced to the auditor on demand. Then photo documentation, film clipping of events, activities are also important. So these are the various types of information or audit evidence which the auditor must look into. Then stakeholders, they are an integral part of the social audit process. The auditor can also look into the documentary evidence used cited in the social impact report, such as a list of farmers with signatures is one of the pieces of evidence to ascertain that they were indeed consulted for the social impact consultation. Any discrepancy noted here can be further scrutinized. Then primary data. This is obtained from first-hand sources and needs to be included in the impact report. Key stakeholders from the organization and beneficiaries should be consulted. Interviews, questionnaires, focus group discussions, surveys are some examples of primary sources of data. Sources of primary data collected should be maintained in a form that can be retrieved by the auditor during audit trail. Now the auditor needs to use the appropriate techniques and sample size to ensure reliability, accuracy, and validity of information collected to derive evidence conclusions. So depending on the nature of social project, a combination of probabilistic sampling methods. So these are the probabilistic sampling methods, and they can ask questions like, okay, this cluster is a kind of probabilistic sampling or non-probabilistic sampling method. So they can ask you questions like this. So simple random, systematic, cluster, stratified. So these are the examples of probabilistic sampling methods. And non-probabilistic sampling methods are quota, judgment, snowball. They can even ask you that this judgmental is a type of non-probabilistic sampling method, probabilistic sampling method, A or B, none of the above. So they can ask you questions like this. Can be used to collect evidence. Evaluation of misstatements identified during the audit and the evidence for the same. Then audited. तो इसके ऊपर भी तो क्वेश्चन बनाने हैं सोनी जी, अभी तो 5th चैप्टर चल रहा है ना? Yeah, yes. है ना? One question. हाँ, इसका ऊपर भी ना we will make more questions. So evaluation of misstatements identified, थोड़ा hint मिलता रहता है इससे आपको, भाई यहाँ क्वेश्चन बना सकते हो. Evaluation of misstatements identified during the audit and the evidence for the same. Then audited financial statements of the organization and the audited utilization certificates of the project. So these are all the types of audit evidences, or this is the information and documents required by the social auditor. So they can even ask that the audited financial statements of the organization are a type of document, a type of audit evidence. What is it exactly? Then evidence building. The social auditor should plan and perform a social audit with an attitude of professional skepticism to obtain sufficient appropriate evidence of the implementation of the social program in the field. Following are the main points to be considered while building evidence. So evidence building, how he will build evidence. First is when designing and performing procedure. So at the time of designing or performing the procedure, he can do some evidence building. So when designing and performing procedure, the practitioner would also need to consider the relevance and reliability of the information to be used as evidence. So when he is designing or performing the procedure, he would
be having at the back of mind that what is the results I'm going to achieve out of this. So whatever information will be available after performing that procedure, that should be relevant and reliable also. So he has to consider the relevance and reliability of the information to be used as evidence if evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another, or the social auditor has doubts about the reliability of information to be used as an evidence. So in case there is some inconsistency or the information is not reliable, then when he is designing or performing the procedure, he has to consider the relevance and reliability of the information. The social auditor should determine what changes or additions to the procedures are necessary to resolve the matters and should consider the effect of the matter, if any, on other aspects of the engagement. The social auditor should accumulate uncorrected misstatements identified during the engagement other than those that are clearly trivial and determine the effect of the misstatement on the assurance report. So he can ignore trivial matters, but he has to accumulate all the uncorrected misstatements identified during the engagement. The social auditor should request from the appropriate parties a written representation, some sort of management representation, that it is provided to the social auditor with all the information of which the appropriate party is aware and it is relevant, confirming the measurement or evaluation of the underlying subject matter against the applicable criteria, including that all relevant matters are reflected in the subject matter information. If in addition to required representation, the social auditor determines that it is necessary to obtain one or more written representations to support other evidence relevant to the subject matter information, the social auditor should request such other written representation. When written representations relate to matters that are material to the subject matter information, the social auditor should evaluate their reasonableness and consistency with other evidence obtained, including other representations. Regarding representation, they may ask you that what type of representations are there, oral, written. Consider whether those making the representation can be expected to be well informed on the particular matter. The date of the written presentation should be as near as practicable to, but not after the date of the insurance report. So the date of the representation should be either before, it should be as near as practicable to, but before the date of the insurance. In no case after the date of the insurance. Then description of applicable criteria. The social auditor should need to evaluate whether the subject matter information adequately refers to or describes the applicable criteria. The description of the applicable criteria advises intended users of the framework on which the subject matter information is based and is particularly important when there are significant differences between various criteria regarding how particular matters may be treated in the subject matter information. Then characteristic of audit evidence. So competence signifies the reliability of an audit evidence. If the social auditor is unable to obtain sufficient appropriate evidence, a scope limitation exists, and the social auditor should express a qualified opinion, conclusion, or disclaim an opinion, conclusion, or withdraw from the engagement where withdrawal is possible under applicable law or regulation as appropriate. So relevance means the pertinence of the information to provide an opinion. The social auditor should evaluate the sufficiency and appropriateness of the evidence obtained in the context of the engagement and, if necessary in the circumstances, attempt to obtain further evidence. The social auditor should consider all relevant evidence regardless of whether it appears to corroborate or to contradict the measurement or evaluation of the underlying subject matter against the applicable criteria. If the practitioner is unable to obtain necessary further evidence, the social auditor should consider the implications for the social auditor's opinion or conclusion. So before forming a formal opinion or conclusion, the auditor has to evaluate the various pieces of evidence which is available and whether they are corroborating or they are contradicting the evaluation. Sufficiency describes whether the information obtained is enough to provide an opinion, judgment, or conclusion. So the auditor has to satisfy itself
that whatever information he has obtained, whatever documentary evidence he has obtained, it is enough to provide an opinion, judgment, and conclusion, and he should refrain from giving an opinion when he is not having sufficient audit evidence. The social auditor should form an opinion or conclusion about whether the subject matter information is free of any material misstatement. ये तो सब हमारे ऑडिट रिपोर्ट का ही पार्ट होते हैं. Informing that matter, informing that opinion or conclusion, the social auditor should consider the conclusion regarding the sufficiency and appropriateness of evidence obtained and evaluation of whether uncorrected misstatements are material individually or in the aggregate, because he has to compile. पहले we have read कि he has to compile all the uncorrected misstatements, and if they are material individually or in the aggregate, so then he should consider the conclusion regarding the sufficiency and appropriateness of the evidence obtained. If the social auditor is unable to obtain sufficient appropriate evidence, a scope limitation exists, and the social auditor should express a qualified opinion or conclusion, or disclaim an opinion, conclusion, or withdraw from the engagement when withdrawal is possible. Sir, one doubt. Who will be the appointing authority of social auditor? This is a social enterprise or a SRO? Actually, It is not. no, actually SRO is the regulating agency. So to SRO, you will be required to inform on a periodical basis what are the engagements, like this AFA is there, no authorization for assignment in case of IP assignments. So similar will be the situation here, that you will be periodically required to inform the SRO regarding the audit assignments you have taken. So they will be maintaining a proper record. Maybe some sort of document identification number is also there, as in case of audit reports. So they might introduce a similar criteria for these audit reports also. But basically, it will be an independent contract between the organization and the auditor. Okay. Like in case of limited companies also, the client finds the auditor. So it is basically the prerogative of the client, but naturally then they have to conform to the SEBI regulations and all those things. So here also SEBI regulations, etc. will be taken care, and the auditor can directly be taken to task if he doesn't perform his obligation in properly. But in IBB itself is assigning all the duties to the listed empaneled in IPs. Is that the case in here? No. In case of IPs also, first of all, the client gets in touch directly with the insolvency professional when he wants to file a petition. And normally his appointment is confirmed by the adjudicating authority, which is NCLT or DRT. Okay. So this is the situation there also. IBBI is simply maintaining a panel, and IBBI is sharing that panel with the adjudicating authority, out of which the adjudicating authority, which is NCLT in case of corporates, they can pick an insolvency professional. So IBBI is not directly into picture. So IBBI is simply maintaining a panel, and they are sharing that panel with the adjudicating authority. And adjudicating authority also comes into the picture when the name of the IP is not suggested by the applicant. As we know that application can be moved by a financial creditor or operational creditor or the corporate editor, and the financial creditor and the corporate editor, they can directly give the name of the, they can directly suggest, and if no disciplinary proceedings are pending, his appointment is normally confirmed by the NCLT. But in case of OC, because giving the name of the IP is not required in case of an application by operational creditor, so in that case NCLT appoints an IP from the list of panel, which is shared by IBBI. So this is the procedure. So there also it is independent of the regulator. So here also something similar will happen, and the clients will directly get in touch with the auditor. So audit conclusions. So they will review the social audit findings and any other appropriate information collected during the audit against the audit objectives. Agree on the audit conclusions, taking into account the uncertainty inherent in the audit process. Prepare recommendations if specified by the audit plan, and discuss audit follow-up as applicable. Contents of audit conclusions. So now we have to see that, okay, we have done all this thing. So what was the, if there is any follow-up required,
What are the recommendations if specified by the audit plan? They have to agree on the audit conclusions, taking into account the uncertainty inherent in the audit process, and then they have to review the social audit findings and any other appropriate information collected during the audit against the audit objectives. What is the content of audit conclusion? So audit conclusion should address issues, the extent of conformity with the social audit criteria, achievement of, this is some sort of review. So audit conclusion seems to be some sort of audit review, like financial reporting review board is there in case of ICI. So similar, they may formulate some reporting review board. So this contents of audit conclusions should address issues such as the following: the extent of conformity with the social audit criteria, achievement of audit objectives, coverage of audit scope, and fulfillment of audit criteria. And if specified by the audit plan, the audit conclusions can lead to recommendation for improvement or further auditing activities. So two audit opinions can be made by a social auditor. First is the unqualified or unmodified opinion, known as clean report, and second is the qualified opinion or modified opinion, or a situation where the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. Then accounting system and internal control, this we can take up tomorrow. Rajesh ji, have you reached home? आप घर पहुंच गए? पेज 94 क्या पेज 94 क्या? सर यही बात आ रही है जो सर ने पूछी। पेज नंबर 94 में क्या बात आ रही है? एक मिनट सर। And complete the NICM certificate course mentioned above. All social auditors will have to be empaneled under a SRO, ब्रैकेट में लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया। ये बन चुका है ना, मुंबई में ऑफिस है। Formed as a separate sustainability directorate under the aegis of ICI. ये क्वेश्चन भी आया था। तो ये नहीं, मुंबई उनका क्वेश्चन कुछ और था। उनका क्वेश्चन ये था कि हु विल अपॉइंट द ऑडिटर। तो मेरा आंसर उसमें ये था कि ऑडिटर विल बी बेसिकली अपॉइंटेड बाय द क्लाइंट। बेसिकली इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द क्लाइंट। अभी भी देखो जो लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज में भी कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है? क्लाइंट ही अपॉइंट करता है ना, रेगुलेटर नहीं अपॉइंट करता। तो यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स अपॉइंट, हमारे यहाँ ICI थोड़ी अपॉइंट करता है। अगर आपका कोई, आपने कोई ऑडिट असाइनमेंट लेना है तो कौन अपॉइंट करेगा? ये सर, सॉरी सर, मैंने सोचा कि एम्पेनलमेंट के लिए पूछा है कि नहीं, इनका कुछ और क्वेश्चन था सोनी जी का। एनीवे कोई बात नहीं। तो अब ये जो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल है, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। राजेश जी, हैव यू रीच्ड होम? पहुंच गए कि नहीं? या रोटी रोटी खाने लग गए हैं कि नहीं? राजेश जी हैं तो सही। No, not responding. नहीं, ऐसा नहीं, वो कई बार होता है।